नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, मुद्दे और साथ ही नए आइडिया। तरन, आपका ब्रांड प्राइमरीली इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली स्नीकर्स इज क्वाइट अ थिंग नाउअडेज। आपने कैसे पहल की? So I was based in the US, right? I was there for about 10, 11 years, and it started with a core problem. How do we make the most comfortable footwear and do that using natural, sustainable and recycled materials, right? तो हम लोगों ने ये सोचा कि इतने सारे जूते बन रहे हैं. India is the second largest manufacturing country in the whole world, but it uses chemically loaded synthetic materials which are not great for the environment, right? So how do we fix it? So we said कि प्रकृति में इतने सारे natural materials already available हैं. Let's source them and let's use them in our footwear. So we started with India's first merino wool based footwear. Then we launched a slipper which is made with recycled tires. Then we launched India's first ever sneaker made with recycled plastic bottles. So we've been the first in launching several materials which never existed in the Indian footwear ecosystem. And इसमें thought process यही था कि natural materials are limited. Natural materials are infinite, in fact, right? And इनके लिए कोई chemicals की जरूरत नहीं है. ये हमेशा renewable environment में आते रहेंगे and हम इन्हीं को use करते हैं. We'll use them and we'll make exceptionally comfortable footwear. Right. So that's the whole idea with what Neiman started. और बहुत ही बढ़िया आइडिया, और उसको आप लोग अंजाम दे रहे हैं वो और भी बेहतरीन है। ऑफ कोर्स जो एक चीज जिस पर आप लोग भी काम कर रहे हैं कि प्लास्टिक का रिसाइकलिंग, मेरिनो वुल जो आप लार्जली इस्तेमाल करते हैं, कमिंग टू व्हाट नीमन्स इज डूइंग, सस्टेनेबिलिटी फैक्टर के लिहाज से कितनी एक्सेप्टेंस मिली है? क्योंकि नॉर्मली एक पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में ब्रेक करना मुश्किल रहता है, एंड व्हेन यू आर अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट तरन, वो और भी मुश्किल रहता है. सो हाउ इज दैट मूव बिन, और कितना एक्सेप्ट हुआ है आपका ब्रांड इस समय? I think it's been very exciting, right? And it's been very fulfilling. Now, right from the time we've started, we've been around just 3-3.5 saal, right? And we have a limited range of products. Like I said, India's first wool-based footwear, India's first slipper made with recycled tires, maybe India's first sneaker made with recycled plastic bottles, recycled cotton-based footwear, right? And just in a very, very short period of time, we have upwards of 7 lakh customers, right? That's a lot for a very young startup. And in this process, we have helped clean up about 4 million plastic bottles from the ecosystem. So when I say clean up, what we do is we collect plastic bottles जो use हो जाती, जो फिकी जाती हैं usually oceans के अंदर, lakes के अंदर, या कहीं garbage trucks में, lands में एकदम पड़ी होती हैं और गंदगी फैलाती हैं. We collect them, we crush them, and we make a fiber out of them. And then from that fiber, we make an exceptionally comfortable shoe. तो इस process में we have not only sold millions of shoes, but we have recycled millions of plastic bottles as well. So what we're doing is, in a nutshell, we are helping clean the ecosystem. Similarly, हम लोग जो slipper बनाते हैं, India is a very, very large slipper market, right? Relaxo has upwards of 3,000 crores, largely selling open footwear. And हम लोगों ने सोचा जब हम slipper industry में enter कर रहे हैं, हम लोग ऐसा क्या problem solve कर सकते हैं along with making it comfortable, durable, anti-skid. So हम लोगों ने ये देखा कि एक टायर जो यूज हो जाता है वो डंप कर दिया जाता है पानी में या बहुत ह्यूज गार्बेज लैंड्स में, और फिर वैसे ही सड़ता रहता है, एंड इट लीड्स टू मलेरिया एंड डेंगू बिकॉज इट ब्रीड्स अ लॉट ऑफ मस्कीटोज. सो वी सेड टायर इज फैबुलसली ड्यूरेबल और ये एनवायरनमेंट से जा ही नहीं रहे, तो उसको कलेक्ट करते हैं, उसको क्रश करते हैं और उससे सोल बनाते हैं. सो वी प्लग इन environmentally friendly products, but we make them look beautiful and they are exceptionally comfortable. Taran, Adidas, Nike, Puma, ये सब लोग आजकल वो recycled and especially plastic sourced from the ocean पर काफी फोकस कर रहे हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ खास लाइंस भी उसके लिए बन गई हैं. Of course, perhaps 100
जूतों के रेंज में से 2 होंगे जो शायद कंप्लीटली रिसाइकल मटेरियल पर रहेंगे, लेकिन द फैक्ट इज कि मार्केट में मुझे जब एक एडिडास का रिसाइकल मटेरियल वाला जूता दिखता है वर्सेस अ न्यू ब्रांड, वहां पर थोड़ा सा बायस रहता है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जाने माने ब्रांड की तरफ। ये बताइए, इस तरह की दुविधा से आप लोग कैसे जूझ रहे हैं और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी टू prominently sell your brand for what it is? Right. So, see, what I believe in core principle when you're building a brand, right? You don't focus on what others are doing. You focus on what you're good at, right? And footwear market is extremely deep, extremely large. There is no winner take it all. Nike came out when Adidas was the best brand in the market, right? Nike has surpassed what Adidas has achieved over the years, right? And it takes 10, 20, 30 years. Brands are built over decades, not months or years, right? So even if these brands come about, create one product, create two products, what they're trying to do is they're just trying to capture what we sustainable brands have built a market for, right? 4 साल पहले इंडिया में किसी में पता ही नहीं था कि sustainability क्या है, but today people search for natural footwear, search for recycled footwear. They search for what we as startups are building, which is a very, very strong community. So when established brands, legacy brands come out and try to copy us or create 1 or 2 products, right? They'll do it for a month or 2, they'll try and sell it, but they'll go away, right? In fact, in a way, if they create, they're building more market for us. They're helping us sell more. So we do what we are good at and we keep building towards it, right? It's a very, very large and hot market. So I'm not worried if, the best of brands come in and launch 1, 2 or 10 products. We'll do what we're good at. D2C का जो चलन 2020 स्पेशली लॉकडाउन के दौरान बढ़ा है, उससे आपको कितना फायदा मिला है नीमन्स के ब्रांड को और प्रोमिनेंटली घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्सेस योर रेगुलर रिटेल आउटलेट? So we predominantly started like a D2C brand, right? Where D2C was not a thing. So we've not done offline for a large period of time. Because हमको पता था जब हम स्टार्टिंग में लॉन्च कर रहे थे, अगर हम एक रिटेल स्टोर में कहीं एक आइल में लिस्टेड हों, consumer doesn't know what Neiman's as a brand is. So we purely focused on online. And COVID के टाइम पे एक ये फर्क पड़ा कि people now stopped going outside, so they started looking for footwear. क्योंकि इंडिया जैसी मार्केट में कोविड के पहले सिर्फ 10 to 12% पेनिट्रेशन था ऑनलाइन का, फुटवेयर सेल्स ओनली, राइट, which was very low compared to the Western counterparts. But COVID has changed it, right, in a way, and we've grown close to 10x in just the COVID era, right? And now we've started to do offline because अब लोगों को पता है Neiman's as a brand, लोगों ने देखा है, लोगों ने सेलिब्रिटीज को पहनते हुए देखा है, क्रिकेटर्स को पहनते हुए देखा है, ब्लॉगर्स को पहनते हुए देखा है, right? All because of our content. And now while we are doing stores, the acceptance is great. एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही थी कि आप 100 से 150 करोड़ तक रेज करने के लिए मार्केट में इस समय हैं. सो गिव अस एन अपडेट ऑन दैट तरन. अब इस स्केल को एड्रेस करने के लिए कितने फंड्स की जरूरत होगी और लार्जली जब आप स्केल प्लान करते हैं वो क्या स्केल प्राइमरीली होगा कि हम ऑनलाइन पर अपनी पहुंच बढ़ाना चाहेंगे, ऑफलाइन में कुछ पेनिट्रेशन चाहिए, या फिर द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को भी उतना ही वाइडन करना है? I think it's a combination, right? Like you said, we are backed by some leading investors within the country, right? We have Sixth Sense, which is considered the brightest consumer minds within the country today. And it's backed us, right, to build one of the largest footwear brands that has evolved from India. And is fundraising, our focus is to, do everything, right? Predominantly look at widening our product range, team building, hiring is a critical aspect. And also spreading online and offline is what we're looking at. So it's not just one aspect, right? It's going to be a combination of all these aspects, which will help us get to that next scale that we're looking for within the next 24 to 36 months, right? और कोई खास टारगेट जो आप अचीव करना चाह रहे हैं in the next 5 years in terms of scale? It could be revenues, it could be profitability. कुछ टारगेट आप शेयर कर पाएंगे? I think we don't look at purely revenue, right? I think for us, it's consumer satisfaction, it's consumer love, it's product love, and entering into markets and products that have not existed before, right? Revenue is a byproduct, and revenue to हम बना ही लेंगे. So I don't think we set revenue as a core goal in